Okay, good morning. Let's start with the lesson. I'm going to share the screen with you people. Okay, so we were discussing about certain applications that are related to internet. So email we have already covered up, right? In general, I'll go through it once again. Email is a written text which can include a multimedia content if required. Like you can attach audio files, video files, and images also. That mail can be sent to any number of recipients, participants, right? And sending and receiving of mails can take place through web-based applications. Okay, so these applications are also called as webmail applications or email applications. Some of them are Gmail, Yahoo Mail, Hotmail, right? So these are certain applications which people can use to send email applications to any number of people at one time, right? So as I told you that we have two kinds of applications where emails are used. And one is a webmail application which is based on internet. So by using them we can send the things to other people on internet, right? These services are available on internet. Apart from that, we have some desktop based applications also, right? So these desktop based applications are basically a softwares that you need to install on your computers, and then these softwares can be used to um, send a mail, right? So the advantage is that you can compile a mail on your PC anytime, and even if you are not connected to internet or your internet is not working, you can simply schedule one email, and that email can be sent only whenever the internet is connected to your software, right? Moreover, it's easy for us to maintain the things, right? You don't need internet every time, right? You can easily check your mails without internet, and moreover you can schedule the things, right? We have a calendar option there when there where we can schedule the things, right? So these applications are also there. Like some of the examples are Microsoft Outlook, which is the most commonly used, right? Then we have Thunderbird, we have some other mobile based applications also. Now see, emails, they use a protocol name called as SMTP and POP3. These are the rules basically. Protocols are set of rules. So emails use these two kind of rules for sending the content from one device, one PC to, or one account to another account, right? Coming to the next thing, we have file transfer, or right, file transfer is sending a file from one machine to another machine using TCP network, using internet in general terms, we can say. So whenever a file is to be sent, then we need a special kind of protocol called as FTP, file transfer protocol, right? So, and this FTP is based on client server architecture. Client server is where one machine works as a client and another machine works as a server. A client machine sends a request to the server, and the server process the request of the client, right? So in this way, files can also be sent from one particular client to another remote system, right? A local host or the machines from where the message or the file has to go is called as a client. It can download and upload files to the server. So two-way process is there. A client can upload certain files to the server, whereas client can download from certain files from the server. Okay, so server is the machine which actually holds the data. It actually holds the information, right? Then another service is Telnet. I'll just stop here so that I can view. Anybody else need permission? No, all are joined. Fine. I'll again resume. Okay. So another service is Telnet. Telnet service is basically terminal network
which is option to remote login into any system by sitting at your place, right? It is again client server based application, right? So the importance is that you people can log into any system remotely by just sitting on your system, right? आप अपने सिस्टम पे बैठ के किसी दूसरे सिस्टम की फाइल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, उसके अंदर लॉग इन कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसी सर्विस जो है वो एक स्पेशल नेटवर्क के थ्रू होती है, विच इज कॉल्ड एज टेलनेट, राइट? So for using this service, the user or the client should specify the address of the remote system. हमें उस सिस्टम का एड्रेस पता होना चाहिए जिससे आपको इंटरेक्ट करना है, right? And that remote system should authenticate himself or herself using a username or password mechanism, right? So kindly mute your these things. चलो अब मैं म्यूट कर रहा हूँ. चलो. So we should know the address, and then authentication system is there. We should have a password and ID mechanism for logging into any other machine, right? Then the next term is World Wide Web, WWW. इसको हम सिर्फ वेब भी बोलते हैं. Web is basically a repository of information. Repository means it's a place where all sort of information is stored, right? And it is spread all over the internet. All over the internet means all over the world. All the devices, all the places, all the computers where the information is stored, right? So all are part of it, and all are linked to each other, right? We know that in internet, computers are linked to each other, right? And whatever information which is stored on these computers on internet, these computers or that information is stored in the form of web pages, right? So number of web pages are formed, and all these web pages are saved at some particular devices which are known as servers, right? So whatever information we want to search from the net, and we have to send a request to that server, the server gives us the response, right? Now these web pages, they can contain variety of data. It can contain text, images, audio, video, or information for linking to other pages. So a lot of things are there which are a part of these web pages, right? Now WWW uses this distributed client server architecture, right? Again, that client server architecture is used. A host machine is the client which sends the request to the server, and server is basically not one machine, it's a combination of various machines all over the internet. And every machine has some specific information stored in it. So all the machines, all the clients, they send a request to the server, and then that request is processed by the server, and then response is sent back to that particular host machine or a client. ठीक है, तो ये सिंपल आर्किटेक्चर है इंटरनेट का, कैसे वर्किंग होगी. Now coming to next topic, which is TCP IP model. Now TCP IP we have already heard about. TCP is transmission control protocol and IP is internet protocol. Now both are used in every part of internet, because we see on internet information is passed on from one place to another place, and how this things are passed on, this is very important, right? So pass on करने के लिए हमें TCP IP चाहिए ही, right? So whenever we are dealing with internet, right, we are essentially dealing with TCP IP model. हम हमेशा TCP IP model को use करते हैं. Basically ये model है क्या? Model is basically a structure of these TCP IP protocols कि ये कैसे वर्क करता है. हमने क्या किया है कि ये TCP IP प्रोटोकॉल का जो सिस्टम है उसको कुछ लेयर्स में डिवाइड किया है,
ताकि सबकी वर्किंग जो है वो अलग अलग हो सके, राइट. I'll show you the layers. These are the layers: application layers, transport layer, internet layer and link layer. ये 4 layers हैं जिसमें जो TCP/IP का work है that is divided, right? These are functions basically. These sub tasks or functions are performed by this TCP/IP model, right? अब ये 4 layers की working में क्या difference है that we'll discuss. Now data or the message is created at the user's end, the sender's end. If I am sending a data, तो जो data है मैं बनाऊंगा, right? So that is the application layer. That part is managed by application layer, right? Similarly, at the receiving end, जहाँ पे data receive हो रहा है, जो receiver है, वहाँ पे भी data is examined and then again processed, right, by the application layer of that particular system. ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर का काम है डेटा मैसेज को क्रिएट करना, ठीक है. सो मेनी प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड इन दिस. दीज आर सम ऑफ द लिस्ट: HTTP, SMTP, POP3, टेलनेट. ये सारी हमने अभी पढ़ा है ऊपर. so these are the protocol used in this layer, right? Then this application layer passes the message to the transport layer, the second layer, right, which appends the information through the source and destination ports of the processes at two ends. तो वो क्या करता है, ऐड कर देता है इंफॉर्मेशन इन मैसेजेस में. जो मैसेजेस हम लोग एप्लीकेशन लेयर में बनाते हैं उसमें कुछ एडिशन करता है इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन क्या होता है कि व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन इज अटैच्ड, इट इज द सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट्स. कि जो सोर्स मशीन है जहाँ से वो डेटा भेजा जा रहा है और जो डेस्टिनेशन मशीन है जहाँ पे वो डेटा पहुंचना है. सो दीज टू मशीन्स, देयर ports are the points where we connect the cables of that particular network. So ये ports की जो locations हैं वो साथ में attach होती है. So at the end the ports process the message. तो ports वो है जहाँ से message जो है wires में या Wi-Fi के through transmit होता है, ठीक है. So that is the place where the message is processed. Fine. Then two end-to-end protocols operate at this layer, जिसको हम TCP और UDP बोलते हैं. ये दो protocols हैं जो इस layer पे काम करते हैं, right? What is the role of the TCP? TCP is a connection-oriented protocol needed when timely and error-free delivery of data is important. So this is basically responsible for, TCP is responsible for timely and error-free delivery of data. UDP is user datagram protocol. It is an unreliable connectionless protocols needed in a scenario such as exchange of short messages and the client server request reply messages. So जहाँ पे client server के बीच में request और reply करता है server, उस चीज को support करने के लिए ये एक protocol use किया जाता है. So right, this is basically used where we have immediate responses. जहाँ पे immediate response चाहिए वहाँ पे हम UDP use करते हैं, right? We don't use it. Basically, this is the system, the computer which uses it, right? So wherever there is a delivery of data is important. So we need an immediate response. The system needs an immediate response. In that place, this UDP protocol is used, right? Okay, so this is transport layer, and then some more things we have written, like streaming videos. The transport layer is also used for streaming videos because occasionally loss of packet is acceptable. So here is the place where the data can be lost. So streaming videos का जो काम है, जब हम videos के साथ deal करते हैं, that time this transport layer is working, right? And this layer divides the messages into number of fragments. Now this line is the most important line here. Transport layer divides the message that we need to send into smaller parts
जिनको हम सेगमेंट्स बोलते हैं, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द मैक्सिमम ट्रांसमिशन साइज। तो ये क्या करेगा टीसीपी, पहले वो उस मैसेज जो हमने भेजना है, जो सिस्टम सर क्लाइंट को भेजना है, it divides that message into smaller parts, right? And what would be the size of the part based on the maximum transmission size? कितना साइज जो है फाइल का मैक्सिमम ट्रांसमिट हो सकता है एट एक टाइम पे, उस साइज के हिसाब से वो पूरे मैसेज को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है, राइट? एंड in each segment TCP will carry the sequence number. It will give a sequence number to all the smaller fragments, smaller segments, right? So that their relative position is maintained, ताकि वो पता लग सके कि ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, ऐसे एक सीक्वेंस नंबर असाइन कर देता है ताकि उसको रीअसेंबल करना हो रेसिपेंट एंड पे, तो दैट विल बी इजी। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन लेयर का हिस्सा है, राइट? देन द थर्ड लेयर, the transport layer, hands over the segments to the internet layer. Internet layer is the third layer. तो transport layer जो है वो internet layer को अपना मैसेज जो है वो फॉरवर्ड करती है, and this adds the source and destination machines network addresses. और ये जो लेयर है इंटरनेट लेयर, वो क्या करती है, जो भी मैसेज जनरेट हुए थे, जो भी ये फ्रेगमेंट्स बने थे, सेगमेंट्स बने थे, उनके साथ सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों मशीन्स के आईपी एड्रेसेस को अटैच कर देती है। आईपी एड्रेसेस आर द एड्रेस ऑफ द मशीन व्हिच इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, राइट? सो ये एक यूनिक एड्रेस होता है हर डिवाइसेस का, जितने भी नेट पे कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनका एक यूनिक एड्रेस होता है। तो एक तरह से जैसे हम लोग इफ यू सेंड पोस्ट मेल में हम लोग एड्रेस लिखते हैं चिट्ठी के ऊपर, तो सेम काइंड ऑफ एड्रेस इज दिस। सो दिस हेल्प्स दिस पीसीज टू डिटरमाइन वेयर द डेटा हैज टू बी सेंट। तो ये आईपी एड्रेस से पता लगता है डेटा कहाँ पहुंचना है। ठीक है, तो ये दो एड्रेसेस जो हैं इंटरनेट लेयर के अंदर, जो दो एड्रेसेस हैं हर पैकेट के साथ ऐड हो जाते हैं। अब ये दूसरा पॉइंट है कि व्हाई दिस सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ एड्रेसेस आर देयर, कि सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों एड्रेस क्यों डालते हैं? हमें तो डेस्टिनेशन एड्रेस डालना चाहिए ताकि वो डेस्टिनेशन पे पहुंचे, सोर्स का क्यों डाल रहे हैं? द रीजन इज दैट इन केस इफ a data packet or a segment is not delivered at the proper place, right? So at that point it has to come back to the source file, right? A request is sent back to the source. तो अगर कहीं पे बीच में डेटा पैकेट सेगमेंट लॉस्ट हो जाता है तो हमें एक मैसेज आना चाहिए वापस कि हमारा डेटा पैकेट नहीं पहुंच पाया। तो वो कैसे पहुंचेगा वापस? बिकॉज ऑफ द सोर्स एड्रेस। So both the addresses, that's why both the addresses are added there, right? And this layer is also responsible for packet routing. Routing is very important part of TCP/IP layer. Reason is routing का मतलब है what is the best possible route for sending any data packet. किसी सेगमेंट को अगर हमने डेटा सेगमेंट को भेजना है तो उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल रूट कौन सा है। तो जितने पैकेट्स बनते हैं, जितने स्मॉलर पार्ट्स बनते हैं मैसेज के, उनको एक ही रूट से नहीं भेजा जाता। नाउ दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग दीज पैकेट्स, दीज सेगमेंट्स ऑन द नेटवर्क थ्रू डिफरेंट रूट्स, राइट? जो भी पॉसिबल रूट अवेलेबल हो। नाउ दिस इज नॉट दैट ओनली वन वे इज देयर टू सेंड अ मैसेज फ्रॉम a source to the destination. There may be different ways. There may be different routes. अब उन रूट्स में से सबसे बेस्ट वाला रूट कौन सा अवेलेबल है हर डेटा पैकेट के लिए, दैट इज डिसाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर लेयर, राइट? एंड देन एट द रिसीविंग एंड पे भी यही लेयर क्या करती है, मैसेज को रीअसेंबल करती है इन करेक्ट ऑर्डर। द ऑर्डर इज मेंटेन, वो सीक्वेंस हमने पहले, इससे पहले वाली लेयर में हमने डाल दिया था, राइट? सो दैट ऑर्डर इज अगेन मेंटेन्ड एंड देन दैट मैसेज इज रीअसेंबल्ड, राइट? इंटरनेट लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है,
इससे पहले हमने किया था एप्लीकेशन लेयर, वहां पे टीसीपी यूज करते थे जहां पे हम फ्रेगमेंट्स बनाते थे, ठीक है, पैकेट्स बनाते थे। और जो इंटरनेट लेयर है जहाँ पे हम एड्रेसिंग रूटिंग फाइंड करते हैं और एड्रेस ऐड करते हैं, ये दिस पार्ट इज मैनेज बाय आईपी प्रोटोकॉल, राइट। सो इट डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ द पैकेट्स। फॉर्मेट ऑफ द पैकेट्स मीन्स वही कि पैकेट्स के साथ एड्रेसिंग लगानी, right? And apart from IP, some other protocols are also there for helping, like Internet Control Message Protocol (ICMP), Address Resolution Protocol (ARP), Dynamics Host Configuration Protocol (DHCP). So ये कुछ और protocol rules हैं जो IP के साथ parallelly work करते हैं to make the things better, right? Then the last one is the link layer, right? The last one you can see in the figure, last वाला link layer है जो IP से internet layer से linked up है। इसको हम host to internet layer भी बोलते हैं। internet layer का host है। so, internet layer जो भी decide करता है वो link layer को pass on होता है, right? Now this layer is responsible for adding header। ये क्या करता है, हर मैसेज के साथ एक हेडर ऐड करेगा जिसके अंदर सेंडर रिसीवर का फिजिकल एड्रेस होगा, ठीक है। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग ओवर हियर इज व्हाट इज फिजिकल एड्रेस हियर। द फिजिकल एड्रेस इज कि जो कंप्यूटर अभी नेटवर्क के अंदर है उसका एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, ठीक है, वो इंटरनेट की तरफ से मिलता है। फिजिकल एड्रेस जो है वो लोकल मशीन का एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये जो हेडर है, ये जो लिंक लेयर है, it adds up a header where these physical addresses is also added to the packet, right? And the resulting message is called as frame here. The final message that we receive is called as a frame. Now this physical addresses correspond to the physical address of the next host to the network to be the message is to be relayed. So physical address ये identify करता है कि हमने किस मशीन को ये मैसेज पास ऑन करना है, राइट। सो मेनली ये काम करता है कि जो कुछ भी आईपी प्रोटोकॉल क्रिएट करेगा, जो भी पैकेट्स वो भेजेगा वो उनको फिजिकली कंप्यूटर्स पे ट्रांसफर करता है, डेस्टिनेशन कंप्यूटर्स पे ट्रांसफर करता है, राइट। सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दीज लेयर्स। एप्लीकेशन लेयर्स में मैसेज बने, ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट नंबर लगाए गए। पोर्ट नंबर इसलिए लगाए जाते हैं कि किस पोर्ट पे डेटा सेंड करना है, ठीक है। और इनके सेगमेंट्स बनाए गए। सेगमेंट्स बनाने के बाद इंटरनेट लेयर पे इनके साथ आईपी एड्रेसेस लगा दिए गए। हर पैकेट के साथ आईपी एड्रेसेस लगते हैं और लिंक लेयर के साथ फिजिकल एड्रेसेस। ये मैक एड्रेस, मैक इज फिजिकल एड्रेस, राइट। सो फिजिकल एड्रेस इज एडेड सो दैट डेस्टिनेशन कंप्यूटर्स कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ आईपी एड्रेसेस, राइट। सो okay, so let's continue now with the next topic, that is safety concerns, network safety concerns. Now see, whenever computers are connected to networks or internet, so lot of problems arises. The problems are basically some software problems or some hardware problems, right? So let's discuss about these problems one by one. Very first thing is malware. What is this malware? Malware are the malicious softwares of the programs designed with the intention to affect the normal functioning by causing harm to the system. So these are basically the programs or software which are designed to harm the system, जिसका काम है system को खराब करना, right? Or it is also used, these softwares are also used for getting unauthorized access to the system. किसी भी system के अंदर unauthorized access करना है, right? So that particular thing is also done by these kind of malicious softwares, right?
or even it denies the access to the legitimate users. Legitimate users are the users which are authenticated. जो authenticated users हैं उन्हीं को कोई भी रिसोर्स एक्सेस करने से रोक देना. ठीक है, तो ये इन सॉफ्टवेयर का, इन प्रोग्राम्स का काम है, राइट. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस वन बाय वन. इसमें सबसे पहला आएगा वायरस. वायरस बहुत कॉमन टर्म है. Virus is a software code that may harm your system by overwriting or corrupting the system files. तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर कोड है, ऐसा प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम की फाइल्स को ओवरराइट करता है या करप्ट करता है. ओवरराइट इज इट changes the instructions of your file, or it corrupts the file, that your files, the instructions which are written within that particular software or computer, they are corrupted, they are not able to work properly, right. So computer virus is just like similar in action to virus of the body. तो जैसा बॉडी पे वायरस का एक्शन है, जैसे आजकल कोरोना वायरस का एक्शन चल रहा है बॉडी पे, the same kind of thing is done by computer virus on the computers, right. Now these viruses, they can replicate themselves. Replicate means they can create multiple files automatically, and then they can affect the body cells, right. It affects the body, right. The same thing is done by computers. They can make several copies of it, inserting into the code of the system program files, right. So the booting sector, system program files basically क्या है कि जो सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल्ड, उन सब सॉफ्टवेयर के पीछे कुछ प्रोग्राम फाइल्स रन करती हैं. उन प्रोग्राम फाइल्स में इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि उस सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है, राइट. सो ये जो वायरस हैं वो उन प्रोग्राम फाइल्स को इफेक्ट करते हैं ताकि वो आपके सॉफ्टवेयर जो है चल ना पाए, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑल्सो corrupts the boot sector. Boot sector is the area of the hard disk which helps your computer to start. Booting is starting a computer. So if your boot sector is corrupted, if your files in the boot sector are corrupted, then your computer will not able to start. आपका computer जो है start ही नहीं हो पाएगा, ठीक है. So many other problems can be created, like computer slow down हो जाता है and even stop functioning. And they stop functioning, the working is totally over. let's say boot sector का problem है, boot sector virus जो है वो totally वायरस को बूट सेक्टर को करप्ट कर देगा, तो आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा. ऐसे ही कुछ फाइल इन्फेक्टर वायरस होते हैं जो फाइल्स को करप्ट करते हैं, जिससे कि फाइल्स जो है वो आपकी एक्सेस नहीं हो पाती, राइट. एंड सम अदर कैटेगरीज आल्सो देयर. सो मैक्रो वायरस इज वन कैटेगरी विच जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इफेक्ट करते हैं. डॉक्यूमेंट जैसे वर्ड फाइल और इन सब चीज़ों को वो एक्सेस करते हैं, राइट. Let's go through this. Boot sector virus affects boot records of the disk. Disk is the hard disk, right. These are memory resident virus. Memory resident means they resides in the memory of the computer, which we are not able to identify. वो hide हो जाती हैं files, हमें दिखती नहीं है, and they get embedded into the disk area. Disk के अंदर किसी important area में वो club हो जाती हैं. So whenever we start the drive, whenever we start a drive, so they are automatically activated, right. One example is Michelangelo virus. Just hold. Okay, so continuing, so this is one example. Then the next category is file infector virus. These are the viruses that attach themselves to executable files. Executable files वो हैं जो
किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करती हैं, एग्जीक्यूट करती हैं, तो अगर ये एग्जीक्यूटेबल वायर फाइल्स अगर आपकी करप्ट हो जा रही हैं, so that means your applications or softwares will not work properly, right? So they basically affect the files. One such virus example is this Romeo Juliet virus. This is one name of the virus given. मैक्रो वायरस मैंने बता दिया, जो डॉक्यूमेंट्स को इन्फेक्ट करते हैं. These viruses they generally comes with the email attachments. Email attachments के साथ automatically add up हो जाएंगे, and whenever we download an email with such kind of virus, they got automatically get downloaded to your systems, right? Melissa is the example of such virus. ठीक है, ये वर्ड फाइल्स को इन्फेक्ट करता था मेलिसा वायरस. और ये they generally travel through email attachments. So email आप कहीं सेंड कर रहे हो तो ये हिडन फॉर्म में उसके साथ अटैच हो जाता है, right? So that's all about today. We'll end up here, and we'll continue next time. So we are left with only 2 minutes now. So let's see any. Sir, both sides are same in that model of TCP and IP. Is there, sir, there is some network problem. See, I told you already that if you have network problems, I'll share the video again to you people so you can go through it. See, TCP and IP, both models, layers have difference, but the reason is that as I told you, the first layer is the application layer which generates the message. Second layer is the transport layer which divides the message into smaller portions, right, segments. Third layer is internet layer which attaches the IP address of all the messages. And fourth is link layer which gives the physical addresses to the messages, right? So IP addresses are the addresses of the internet, and physical addresses are the addresses when your system is local. It's a local machine, right? It's the address of one particular device, one particular computer. So there is a difference. Just go through the things that I'll share up. The book is already shared it to you people, so go through it. So the things are pretty clear there. And go through the diagram which is given. Diagram se clear ho jayega. Fine. Any other problem you people have? Chaliye, then that's it. So I'll end up here. So go through the things and then we'll discuss in the next time. Okay then. Okay, bye bye.